That is something which is really something you should value, something you should reflect on, something you should build upon. अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा अनुभव शेयर करता हूँ। मेरा इंटरव्यू जो था वो 21 मार्च 1977 को था। कृष्ण गोपाल जी इस पे जानते होंगे, 21 मार्च 1977। That was the day emergency was revoked. So I go in for interview, Shahjahan Road, first person that morning. And that morning from previous day, the election result is coming. We were up all night watching the election result. सोए नहीं थे, it was showing on our face. And imagine I'm the first person, as the defeat of the emergency rule is coming into the understanding of people, you walk into your interview. In a way, that is what got me through the interview. I was a political science student. So my interview, the first question they asked me, अच्छा आप political science पढ़ते हैं, so please explain to us, ये election में हुआ क्या? Now, I had two takeaways from that experience. One, very senior people, many of them former government servants, senior government servants, कुछ लोग जो हैं secretary रह चुके हैं, important people of political standing, people from different services, intellectuals. They are asking a 22-year-old student, कि भाई समझाओ हमें कि हुआ क्या इस election. Now, that is where I was lucky. It was a subject, because every Indian is interested in politics. If you are in JNU, you are super interested in politics. On top of it, I was a political science student. And we had all taken part in the 77 election campaign. We had all actually gone there and worked for the defeat of emergency in 77. So I forgot I was in the interview. I started giving them gyan, though I was 22. Okay. But my two takeaways. One, at that moment my communication skill somehow came together. I was able, because these were all people in a way who were connected, who were quite sympathetic to the government of the day at that time. To explain to the people who are sympathetic to the government of the day, भाई आप लोगों को हुआ क्या, without offending them, was actually quite a challenge. And the second thing which I learned that day, that ये Lutyens bubble जो है ना, these people were really shocked. They could not believe that this election result had happened, whereas for us as ordinary students, we could see that there was a wave against emergency. So from that day, I had two carryaways from my interview. How to communicate under pressure and do it without offending people. How do you persuade? How do you explain? This was one carryaway, and the second, which was for me a political carryaway, that important people may be living in a bubble and not realizing actually what is happening in the country. And people on the field, because we thought of ourselves, we were students who had done campaigns. We had gone, I remember at that time going with my friends, we went to Bhiwani, we went to Muzaffarnagar, how we had picked up the sense on the ground. But people who sitting in Delhi with all the information from all the systems, somehow they missed it. So with that memory, let me come back to all of you. You are today roughly, I would say about 25, 26 in age. When independent India turns 100, you will be 47, 48. So this era, this 20 years, जो हम कहते हैं अमृत काल है, विकसित भारत की तरफ हमें जाना है, this is your era.
It is your era because you will have to work, you will have to deliver, and you will be the beneficiaries of this era. You will be the leaders of this era. We say today that, India will become by 2047. Definitely we know for sure by 2030 we will be the third largest economy. By 2047 we will be closing the gap between 3 and 2. So I want you to think not just a sense कि भाई एग्जाम पास कर लिया, सर्विस में आ गए, feeling very happy, which you should, but I want you to think 20 years ahead. I want you to think that अगले 20 साल में जब हम विकसित भारत की दिशा में जाएंगे, आपका इसमें क्या योगदान होगा, और what is also the mindset you have to bring for Viksit Bharat to be successful. And I want to put some thoughts before you. One, I heard some young colleagues say that we are very happy that today हमें सर्विस करने का एक अवसर मिला है. Serving your nation. Serving your nation is, there can be nothing of greater pride than serving your nation. But do remember, at the end of the day, we are all a service. All of you who have entered, your Indian administrative service, your Indian foreign service, your Indian railway service, your Indian police service, your Indian revenue service. Important word, service. And something very interesting is happening in the world of service. There was a time कि जो सरकार कहती थी, जो देती थी, लोग मानते थे उसको. ये ज़माना अब बदल गया. अब अगर आप पब्लिक में देखें, वहाँ एक जागरूकता है, वहाँ एक सेल्फ अवेयरनेस है, लोग अपना हक पहचानते हैं. Expectations of the public have gone up. Expectation of service given by government has gone up. और खुद मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ, आप में से ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट तो होगा ना. अब एक समय था, पासपोर्ट मिलने के लिए लोगों को 1, 2, 3 साल लगते थे. ये खाली समय का विषय नहीं था. अगर आपको कहीं जान पहचान नहीं थी तो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन कोई देखता ही नहीं था. जब 77 में मैंने फॉरेन सर्विस एंटर किया तो हमारे कॉलोनी में जो रहते थे उनको लगा कि भाई हम किसी को जानते हैं जो हमें कम से कम पासपोर्ट दिला सकते हैं. तो ये महत्व था उनके मन में. अब आप देखिए पासपोर्ट के बारे में क्या हुआ है. आज आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपका पासपोर्ट, और खासकर जहां आप अपना बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, आधार देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, आपका पासपोर्ट जो है कुछ दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते, महीने के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है. बट ये नहीं है कि लोग कहते हैं अच्छा भाई पहले साल लगते थे, अब कुछ हफ्ते लगते हैं, तो चलिए बड़े खुश. नहीं, पब्लिक की प्रेशर है कि हमें तो अब आदत हो गई है कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते में मिलते हैं, और वहाँ डिले हो गया तो आप कुछ करिए इसका, या इतने डॉक्यूमेंट आप क्यों पूछते हैं, इसको कम करिए. तो पब्लिक इज कॉन्स्टेंटली प्रेशराइजिंग, इम्प्रूव सर्विस. हमें कभी जो सरकार में है, हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हम एक लेवल के पहुंचे हैं और उसके कारण अब लोग संतुष्ट हैं, और उनको संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए. जब तक पब्लिक प्रेशर जो है, पब्लिक प्रेशर इज अ वे ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. इट इज ओनली बाय इंप्रूविंग परफॉर्मेंस कंट्री विल ग्रो. सो टुडे व्हेन वी से we serve the nation, serving the nation is also a matter of pride, but it is also something which we should set कि हमें अपना performance, how does every generation improve on the performance of the previous generation. Second aspect is transforming the nation.
जो परिवर्तन हमें रोज दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन जो है, क्योंकि हम इस परिवर्तन के बीच में हैं, कभी कभी इसका महत्व हम खुद नहीं जानते। जब हम बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, और लोग हमसे पूछते हैं कि भारत में हो क्या रहा है, और अगर हम विकासशील देश जाएं, ज़्यादातर उनकी चुनौतियां जो हैं हमारी। जैसे अब मैं इजिप्ट गया, उनके यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अनाज का, फूड का, उनके यहाँ गेहूँ खाते हैं। और जहाँ पीडीएस है, उनके यहाँ दिक्कत है कि लीकेज का विषय। या कहीं आप और जाएं जहाँ पब्लिक हेल्थ वैक्सीनेशन का हो, या कोविड के समय में ये कोविड वैक्सीनेशन कैसे करें। तो आज जो है हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे, पोषण से लेकर पेंशन तक, जब हम आवास योजना की बात करते हैं, घर देना, जहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं कि आज जो है देश में 60% लोग जो हैं उनको डायरेक्ट न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है। हम जब कहते हैं कि हमने आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर दिए हैं, उसका मतलब है कि हमने पूरे जापान की आबादी को जो है कवर किया है पिछले दशक में।